something about what? The concept of labor legislation, objective of labor legislation, okay? Types of labor law, then principles of labor legislation, and growth and development of labor legislation. So this much area of labor legislation already we have completed in your first class. Okay? Now we will discuss international labor organization. Okay? First we will discuss International Labor Organization, then after we will discuss Factory Act 1940. Right? So International Labor Organization. See, जहा कहूची ध्यान पूर्वक सब सुनिबो कोन कहूची जहा दरकार चटचट नोट करिबो हैला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन was established on 1919. ठीक है, it was established in 1919. International Labor Organization, it was established after the end of First World War. In fact, it is the only organization, international ILO, was the only organization that survived after the Second World War. At the end of First World War, it was established, and it was only organization, it was survived after the Second World War also. Right? International Labor Organization was established to maintain peace in the world. Right? At the end of First World War, the organization, it was established to maintain peace in the world. It established in the Treaty of Versailles in France. It means what? This International Labor Organization established at France in Versailles. France ra Versailles ra gote treaty. Treaty means what? Gote sandhi re ko establish karagala. The headquarter of International Labor Organization, it is there in Geneva, right? It is there in Switzerland. Switzerland, Geneva, the headquarter of International Labor Organization. Now, at present, 187 member country, means country, participate in the International Labor Organization. It means what? 187 member countries at present, it is there in the participated in the International Labor Organization. India is one of the first member country, and it participated in ILO since 1919. India became a member country of ILO since 1919. 1919 ही इंडिया ILO रो गोटे member country भाबरे participate करिछि, right? So this is all about the concept of International Labor Organization. Concept, I'm talking about concept, introduction. Now I will discuss the objectives and structure. Why International Labor Organization is basically is there. What is the importance of International Labor Organization? That I will discuss. But you just remember, kon kahili, kon point eti man rakhibo. International Labor Organization, it was established at the year of 1919, at the end of the First World War, and it survived after the Second World War also. Right? It is the basically it established to maintain peace in the world, and it is basically there in the Treaty of Versailles in the France. The headquarter of International Labor Organization, it is there in Geneva, Switzerland.
187 member country at present. It is there in ILO. India is one of the member country since 1919. So this is all about the concept of ILO. Clear? Now we will discuss some objective of International Labour Organization. Kon objective ne? Role kon? Objective kon? Kahinki International Labour Organization? See, the International Labour Organization fixed 10 objective. 10 objective fixed kala. Fixed 10 objective, and basing on this, the International Labour Organization established at the year of 1919. Kon se objective? What are the objectives? To providing full of employment opportunity, full of employment opportunity, and raise the standard of living of the employee and the worker. To providing employment opportunity towards the society and to develop the standard of living of the employee, standard of living of the labor and worker. That is the first objective. Second objective, basically, to the International Labour Organization to provide what? To provide the one is the employment opportunity. Apart from this, it provides the what? Adequate skill and the motivation and satisfaction level to the employer. How the worker will get satisfaction in the organization, how they will motivate towards the organization, what the organization will provide the benefit so that they will motivate and satisfied. That is another objective of ILO. Then after, the ILO providing some what? Training and development facility to the worker, training and development facility to the labor. How the labor will work properly. Now, the organization have to provide proper training and development facility so that they can work properly, so they can enhance their knowledge, skills, and ability. Apart from this, the organization have to provide proper wage, timely wage, proper working hours. Time means what? They have to fix the working hours. Mano ichha 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा काम करिवनी no. Mo ichha hala तुमको जब पैसा देबी mo इच्छा हाला देबी no. You have to provide timely wages. You have to fix the working hours. You have to providing very good healthy working condition, work environment, so that the worker should not face any kind of accident, any kind of working in the organization. Right? Apart from this, what? To protect the worker. Apart from this, what? To basically adopted collective bargaining concept. Bargaining means what? The employer and worker, they will sit together and they will basically discuss. They have to find the solution of the problem. Any kind of problem it is happening in the organization. So both the people, they will together and they will find the solution of the problem related to anything. That is a collective bargaining concept adopted by the International Labour Organization. Apart from this, adapted health, safety, protect to the worker related to health, safety, and welfare facility. That we will discuss in the Factory Act. Providing maternity protection, child protection. Apart from this, to basically in the present environment, in the first class already I told you. So presently, Child Labour Regulation Abolition Act is there. Means the child should not work in any kind of establishment. So we have to protect the child. We have to protect the woman. We have to give respect to the woman, protect the woman. We will provide maternity benefit to the woman at the time of pregnancy. Right? Apart from this, adequate nutrition facility, housing facility, I got a point about to providing adequate of housing facility, nutrition facility. That is the worker and the labor. Social security. Quality of education, apart from this, providing social security. So these are the objectives
framed by International Labour Organization, and basing on this, the International Labour Organization maintaining means some kind of means the how this objective framed by the International Labour Organization, how this objective it was implemented in all over the world, in the country, every country in all over the world, that I will discuss right now. Okay? So these are the objectives framed by the International Labour Organization, and it was established in the 1919. Right? Then the structure of ILO. Structure of ILO. What is structure of ILO? See, the structure of ILO, you can see this slide here. The structure of ILO, it is broadly divided into three parts. One is International Labour Conference. Second one is governing body. Third one is International Labour Office. जहाँ जहाँ कोई भी चटाचट लिखी दो, है International Labour, first, there are three wings in the International Labour Organization. First, International, what is International Labour Conference? See, International Labour Conference, it hold its session once in a year. International Labour Conference holds its session once in a year. It means conference माने आमे बुझु छे conference गोटे होची international रे कोठी ना फ्रांस रो जेनेवा रे जो conference टा होची हेडा केबे होची ना वर्ष रे थरे होची, right? वर्ष रे थरे at the month of June. So the International Labour Conference, it holds its session once in a year, right? The objective of the International Labour Conference to adopt convention and recommendation, and to adopt convention and recommendation. Mone rakhibo convention recommendation kono moina kahibi, to adopt convention and recommendation. Apart from this, the International Labour Conference, the number of the member of International Labour Conference, the ratio is 2:1:1. It means what? International Labour Conference 2:1:1 ratio ro loko mane participate karanti. It means what? Mu ketera country member country achi kahili 178 member country at present it is there in the International Labour Conference, right? Sorry, 180 87. So 187 ta country ro, suppose he is one of the member country of ILO, India ru kete jano jibe 2:1:1 ratio re, ta mane 2% behalf of the government, 2% behalf of the government is cabinet ministers, one representative of the employee, one representative of the employer. Okay? So 4% they will participate of each member country once in a year at the International Labour Conference. Right? तो कोच ना नहीं कोच मु बुझी पानी मु बस एठी की जाउची हैला यस अच्छा बुझी गला वेरी गुड ये कोन कहले रे बापा मां माने यस हां 187 हां मैम वॉइस ब्रेक होउची किछि बुझा होउनी अच्छा अरे वॉइस ब्रेक होउची नथिंग इज विजिबल और ऑडिएबल पिला माने not visible visible audible dita कहउची तो अरे कुहरे बापा हाँ आओ हाँ वेरी गुड क्लियरली विजिबल एंड ऑडिएबल वेरी गुड थैंक यू अरे ऑडियो ब्रेक बेले बेले होउथबो जोटी पूछा विजिबल बट नॉट ऑडिएबल अच्छा नॉट ऑडिएबल माने कोन कहलो एटिके ये अछि तो वेदर माने ये अछि सेहिति पय मे बी ऑडिएबल होउ नतुबो
एई ना ऑडिबल होउची yes or no not visible ना मुना visible टाको ये करिची काई कहिलो ए तुमको तुम बुझुछ ना नहीं बुझी पानी ड्यू टू सम बैड वेदर yes 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 ओके एना सुबा जाउची ना ओके 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 थैंक यू सुन कौन कहूची सुन मु कौन कहूची तुम चटाचट फास्ट लिखिबो हैला सुन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होल्ड इट्स सेशन once in a year वर्ष रे थरे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होची ठीक है सेडी किए पार्टिसिपेट करची स्ट्रक्चर प्लीज अगेन ओके हां को देखोची देखा गला सुना इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होल्ड इट्स सेशन once in a year लेखिबो अपॉइंट होल्ड इट्स सेशन once in a year वर्ष थरे सेडी किए पार्टिसिपेट करूची now the member countries are participating in the international labor conference the ratio is 2:1:1 2 means that is the cabinet minister behalf of cabinet minister one is representative of the employee another is representative of the employer right so india ru 4 जण गले सेमती ऑस्ट्रेलिया रू 4 जण गले 4% सेमती अमेरिका रू 4% गले सेमती इंग्लैंड रू 4% गले सो समस्त 4 जण 4% 187 मेंबर कंट्री रो हैला लोक माने सेडी पार्टिसिपेट करिवे क्लियर एमाना काम कोन ए जो करिवे व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस पर्सन माने कोन करिवे ना दे फॉर्मुलेट द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल रे से माने लेबर मानकर गुटे स्टैंडर्ड मेंटेन करेबे दे विल फॉर्मुलेट द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड apart from this they will fix amount of contribution by the member country कोन करिवे ना ए जो मेंबर कंट्री माने आईएलओ रे पार्टिसिपेट करिसंती से माने किछ पैसा देबे ना देबेनी देबे आ कोन माहले पार्टिसिपेट कर देबे जायगिरी देबे से केते पैसा देबे कोन देबे केमिति देबे ए सब से माने कोन करिवे फिक्स करिवे to fix amount of the contribution by the member country केते केते टंका वर्ष को डिपॉजिट करिवे आईएलओ को हैला then कोन करिवे they elect the president and select the governing body once in a 3 year एमानो काम कोन आईएलओ रो काम कोन आईएलस रो काम कोन ना they will elect the president कहारो governing body रो president elect करिवे and they will select the member of the कोन they will select the member of the governing body once in a 3 year international labor conference conduct habo once in a year governing body member select हेबे once in a 3 year so governing body member के सेटा मना कहबी हैला सो बुझिलो सो एमाने once in a year हेबे से माने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करिवे गवर्निंग बॉडी मेंबर को सिलेक्ट करिवे apart from this they will develop the policy procedure guideline rules regulation everything in the international level all the members are there in a conference and they will adopt all those things policy procedure rules regulation guideline एमाने सब इंटरनेशनल लेवल रे माने कोन करिवे फिक्स करिवे right and the most important thing of the ILC international labor conference कोन करिवे से माने they will adopt the convention and recommendation the convention and rectification and recommendation means what the convention and recommendation means suppose for example ILC कोन कला गोटे convention adopt कला for example मो कहूची equal remuneration there is no discrimination between male and female we have to provide equal remuneration to the male and female worker if the persons are working in a same area एरा गुटे कन्वेंशन अडॉप्ट कला हला ताको कोन करिवे मेंबर कंट्री माने रेकमेंड करिवे और मेंबर कंट्री माने से कन्वेंशन को एक्सेप्ट करिवे हला इंडिया कोन करिवो से कन्वेंशन को एक्सेप्ट करिकि हमरो इंडिया रे यूज करिवो सो एमती कोन आनिबो डायरेक्ट यूज कर दबो नो से कन्वेंशन को आईएलओ रो एक्सेप्ट करिकि हमरो असेंबली रे कोन करिवो ताको पास करा जी हला जते असेंबली रे आफ्टर फर्स्ट आईएलओ रे कन्वेंशन एक्सेप्ट करा गला देन ताको आनी के हम असेंबली रे पास करा गला देन आफ्टर pass in the assembly then it will be implemented in our country so it is the international labor standard
international uniformity. बुझिलो ना बुझिलोन रे बापा कोन गलो रे बुझिलो ना अरे यहना ना yes or no clearly बुझिलो yes ma'am very good thank you हाँ very very good so एटा को आसी के हमर कोन हबो thank you so हमर कोन हबो ना फर्स्ट से कन्वेंशन गोटे एग्जांपल देली एमिते इंडिया सह बहुत सारा कन्वेंशन एक्सेप्ट करी के हमर इंडिया सबुडो हाईएस्ट इंडिया हमर जत्ते आज पर्यंत हमर डेवलपमेंट हेची much more convention accepted and adopted by India and it implemented in our country right so this is a convention this to maintain international labor standard सबुआडे समान हमें मेंटेन करिबा right that is the ILC that is a work of ILC then asila ki governing body a governing body mane ki see governing body the ratio of the governing body member is 2:1 again ka mane 2 2 1 1 so total number of the member of the governing body is 56 56 जन governing body रो member केते total 56 ratio कोन 2:1 ता माने कोन ना 28% behalf of the government 14% behalf of the employers 14% behalf of the workers 56 को हमें तीनटा रे डिवाइड कर देले 2:1 रेशियो रे ता माने केते आसले 28:14:14 so these members are there in the governing body and the president is also there in the governing body right ताको elect selection किए करले ना international labor conference member elect the president and select the governing body members कोन सब वर्ष मानको selection election हबो no केबे once in a 3 year थरे governing body president selection हे गले माने they will continue up to 3 year 3 वर्ष पर्यंत से माने कंटिन्यू करिवे क्लियर 3 years पर्यंत से माने कंटिन्यू करले के गवर्निंग बॉडी मेंबर राइट नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ द गवर्निंग बॉडी मेंबर काम कोन ना द गवर्निंग बॉडी मेंबर दे विल मेंटेन बैलेंस कोन बैलेंस मेंटेन करिवे and they will maintain balance and coordinate the work between the ILC and ILO ILC International Labour Conference and ILO International Labour Office governing body ro kama kona they will coordinate they will maintain balance between International Labour Conference and International Labour Office on the basically the governing body member on the help of the International Labour Office they will work out everything and they will do everything on the basis of the help of the International Labour Office right they are the governing body member एमाने किए ना एमाने सब जो कंट्री रो भी लोक हेई परिबे आंको को सिलेक्शन और इलेक्शन करा जिवो now what is the work of the ILO International Labour Office रो काम कोन International Labour Office work as a secretariat आमर सेक्रेटेरिएट रो काम जहा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस रो काम सेया सेम किछ डिफरेंस नै इंटरनेशनल लेबर ऑफिस कोन करिवो ना बेसिकली द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस will collect money of the every member country they will conduct the international labor conference apart from this any kind of work any kind of activity as the secretariat so they will do everything so it's slide please ko dekho hella so everything that is as like as a secretariat बुझी गलो yes or no को first रे एतिगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एतिगी ही हमरो रहिला कोन व्हाट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्लियर ना ओके yes समस्त बुझी गलो ओके थैंक यू आको एति के मन रखिबो आको गोटे सेपरेट चैप्टर रे मन रखिबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैला कोन ना जदी ग्रोथ रे आसिला ताको इंक्लूड करिवो स्पेशल क्वेश्चन आसिले मध्ये आको ए टाइप रो मन रखिबो डेवलप होइतिला 1900 थैंक यू माय डियर स्टूडेंट बुझी जाओ प्लीज एमती हैला देखो स्लाइड देखो
हैला देखो हैला दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेबर ऑफिस तीनटा आगु रखिबो दांडो रे कोन होची ठीक से मन रखि दबो हैला इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस रो रेशियो होची या कोन 2:1:1 ठीक है देन आफ्टर सेमानकर जहा मु कहली अमेंडमेंट करिवे लेबर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिवे इलेक्ट करिवे सिलेक्ट करिवे से सेमानकर फंक्शन ऑफ आईएलसी हैला दिस इज ऑल अबाउट आईएलसी देन आई गवर्निंग बॉडी say 28 14 14 2:1:1 ratio total number of member is 56 कहिची मु हैला and they will maintain balance between ILO and ILC right सम की करिवो गवर्निंग बॉडी मेंबर मान हैला मेंटेन करिवे 3 वर्ष पर्यंत से माने रहिबे हैला देन ILC कोन वर्क लाइक एज ए सेक्रेटेरिएट एति के मन रखिबो अधिक किछि मुंड पुरेबा दरकार क्लियर चलो let's start the slide Sala okay now we will discuss the Factory Act 1948 ठीक है the Factories Act 1948 clear see कौन कहूची फर्स्ट रे सुनि in India the first Factory Act was established at the year of 1881 lekha hai in India the first Factories Act was established or passed in 1881 first trade union के पास थिला 1891 first factory act के पास थिला 1881 ठीक है after so many amendments after 1881 to 1908 so many amendments it was there in the Indian Constitution. Then, after independence of India, the first Factory Act, it was established and adopted by the Indian Constitution at the year of 1948. First Factory Act was 1881 re. So many amendments, बहुत सारा amendment है जी 1881 रू से आगे जाने का दरकार नहीं हमें main area को जीवा after 1880 amendment it was there in the Indian Constitution then after 1947 independence 1948 the Factory Act established and it was passed in all over India basically in our country right? Then in the Factory Act 1948 have total number of chapters are 11 and total number of sections is 120. So how many sections are mane rakhibo? Ame thiki no padhile bhi tum mane rakhibo. So there are 11 in the Factory Act 1948 and there are 120 sections. It is there in the Factory Act 1948. तार बहुत से ना सबसेक्शन हलानी आउरी सबसेक्शन हलानी बट हमको इत्ती की since 1948 रो till date हमर इत्ती की सेक्शन आउ चैप्टर अछि 11 चैप्टर ये सब चैप्टर कोन से there are 11 chapter in the Factory Act already I told you ये सब चैप्टर कोन ना basically here chapter 1 is the preliminary introduction chapter 2 is the inspecting staff chapter 1 is the preliminary means it is the introduction ठीक है Chapter 2 is the inspecting staff. Chapter 3 is the health. Chapter 4 is the safety. Chapter 5 is the welfare. Chapter 4 ro gote addition means what achi amendment hai ki chapter 4 a kara hai chi provision relating to hazardous process seita
आमे से दरकार बट आमको एतेटा दरकार नहीं सेठी आमे चैप्टर 5 को पढ़ी चैप्टर 5 इज अ वेलफेयर चैप्टर 6 working hours for adult worker chapter 7 employment of young person chapter 8 annual leave with wages chapter 9 special provisions and chapter 10 penalties and procedures and chapter 11 supplemental these are the different chapter it is there in the Factories Act 1948 11 chapter 120 section now how many chapter we will discuss ame kitara chapter discussion kariba ame at best 6 chapter discussion kariya 6 ru 7 chapter discussion because all those chapter is highly essential for every student in the Factory Act 1948 clear now see chapter 1 section 2 कौन chapter 1 it is the important definition ठीक है chapter 1 is the important definition preliminary important definition under the section 2 A B C D E F G H I J means section 2A section 2B section 2C section 2D section 2E F G section 2 the important definition and under the section A B C D these are the some important definition under the Factory Act 1948 clear ए सब important definition कौन कहूची सुंदर भाबरे सुनी के मने रख clear कौन ना first section 2A आकु ना बुझिले Factory Act बुझी परिबोनी आ एटा हला तमर शॉर्ट क्वेश्चन हला एग्जामिनेशन रे हला section 2A section 2A it is there in the adult what do you mean by adult adult means a person who has completed his 18 years of age adult किए जे 18 वर्ष कंप्लीट करछि आमे भी जानचे जे कोन माने आमे जहा जानचे फैक्ट्री एक्ट रे से अछि किछु डिफरेंस नै हैला adult माने किए adult is a person who has completed 18 year of age adolescent means who is the adolescent adolescent means a person who has completed his 15 years of age but not completed 18 year of age सुनो कौन कहूची मु टिके सुनी दियो काहे कि मु 15 कहले मैम चाइल्ड माने तो 14 आपण 15 काहे कि कहले मु कहूनी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहूची थोड़ी ना मु कहूची रे मां अच्छा सपोज आमे पढिबा द चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट देयर child means a person who have not completed 14 years of age बुझिला but 80 Factory Act रे child means a person who have not completed his 15 years of age मने रखिबो दीटा आगो Factory Act रे 15 को child कहा जाउची child act level child means child labor regulation abolition act रे 14 कहा जाउची so एडी 15 पर्यंत मन रखिबो so who is the adolescent adolescent means a person who has completed his 15 year of age but not completed 18 year of age 15 वर्ष फिनिश करी देची but 18 वर्ष 15 ରୁ 18 को हम adolescent कहै calendar year means what calendar year means it is the period of 12 months 24 months कहउतले it is the period of 12 months that is a calendar year right child means a person who is a child means a person who has not completed his 15 years of age बुझिलो चाइल्ड किए जे कि 15 ईयर कंप्लीट करी नहीं फैक्ट्री एक्ट रे 15 चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट रे 14 मन रखिबो राइट नाउ हु इज द यंग पर्सन means a person who is either child or adolescent young person का कहबा हम young person माने भाबु जे कि 18 वर्ष रो अधिक होई जाइथिबो ना 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 से माने young person फैक्ट्री एक्ट अनुसार नहंती तो किए ना either child भी हे पारे और adolescent भी हे पारे सो अल्टीमेटली जे 15 वर्ष फिनिश करनी ताको भी young person कहबा जे 18 वर्ष फिनिश करनी ताको भी young person 18 वर्ष हे गला परे ताको हमें adult रे कैलकुलेट करिबा राइट डे मींस a period of 24 hours starting from the midnight obviously
24 घंटा को आमे गोटे दिन कहूचे जोटा कि हम राति 12 रु स्टार्ट होची week means a period of 7 days starting from the Saturday midnight Sunday Monday haboni mane rakhibo day means a period week means a period of 7 days starting from the Saturday midnight केबुड स्टार्ट होची ना Saturday midnight रो स्टार्ट होची पावर माने जो आम पावर नो हैला हमर एते पावर अछि नो दैट इज नॉट हियर सो पावर मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहूने पावर कट हे गला सो दैट इज पावर मींस इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट प्राइम मूवर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मूवर means any engine or motor or any type of appliances who generate or otherwise provide power धर आमे गोटे जनरेटर यूज करछे गोटे मोटर यूज करछे जोथिरे कि आमे पावर को जनरेट करछे और प्रोवाइड करूछे ताको कहा गला प्राइम मूवर हैला ना व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मशीनरी माने हैला धर गोटे जनरेटर को आमे केमती बोही का गोटे जगह नबा मु एका बोही परिबी तुम एका बोही परिबो ताको कोन करबा गोटे बड्डो मोटर अछि ताको केमती बोहीबा ताको हमगु दरकार कोन एनी व्हील any kind of a wheel any kind of pulley or any kind of system that thinks it can be move easily one area to other area that is a transmission machinery right then asila kono na machinery माने हमें जानिचे मशीन हमें सब बेले यूज करछे वर्ड यूज करछे मशीन माने कोन इन मशीनरी द प्राइम मूवर माने कोन मोटर इंजिन माने थिबे द ट्रांसमिशन मशीनरी जोटा कि हमें इजीली मूव करछे गोटे एरिया रो आ गोटे एरिया को से थिबो एंड ऑल अदर एप्लायंसेस हाउ समस्त मध्ये थिबे वेयर द पावर जनरेटेड ट्रांसमिटेड और अप्लाइड पावर जनरेट होतो ट्रांसमिट होतो अप्लाई होतो एंड सब मिसी के सेठी काम करूथिबे दैट इज द मशीनरी सो इट इज इंक्लूडिंग प्राइम मूवर ट्रांसमिशन मशीनरी it is there in the machinery right now manufacturing process means kon manufacturing process means these are the manufacturing process मन रखिबो एते मन रखिया दरकार नै गोटे दिटा पॉइंट इथरो मन रखले सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माने केडे बडा लंबा लिस्ट देछि देखो कोन हबो ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस हमें सिंपली माने रखिबा इट इज रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस it may be making altering repairing ornamenting finishing packaging oiling washing clearing breaking kette jinso tome deichi jette पढुचो पढ so all those things it related to the manufacturing process जहां भी ए काम होउथबो साको हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहिबा that is the related to a factory clear manufacturing process kala now the most important thing is that kona now what is after manufacturing process who is a worker ki a worker is a person section 2 kitira asila L section 2L define as per the Factory Act 1948 section 2L define a worker is a person who is working directly or through a contractor agency contractor with or without knowledge of a principal employer whether remuneration or not but the manufacturing process must be carried on एतिके मन रखिबो कोन कहूची वर्कर किए मुली गोटे वर्कर आई एम वर्किंग डायरेक्टली और थ्रू ए contractor मु निजे जाई की काम कोची डीडीसी रे और मते गोटे contractor नै की जाई मु प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किए डायरेक्टर को जानी थाई पारंती डायरेक्टर मते न जाई थाई मु डायरेक्टली जाइतले मते डायरेक्टर जानिबे मु जदी थ्रू एजेंसी जाई न जाई भी थाई पारंती न जानि भी थाई पारंती थ्रू ए contractor with or without knowledge of the principal employer right whether remuneration or not अरे remuneration जदी मु सेठी पाइबी ना कोन मु माळया काम करिया जाईची फ्री रे बसी सेठी खटिबी ना it may be I will work there it may be for cash or it may be for kind माने कोन मते दया करिबो से ना kind means कोन ना kind means हैला
मु जो काम कली दिन सारा मते खुशी कि से कौन करिवो किछिटा जिंस देई दबो कोन मते किछि अट्टा देई दबो मते किछि चावल देई दबो मते किछि परिबा देई दबो हां मु काइंड पाई मध्ये सेठी काम करी पारे I may be work for cash or I may be remuneration or not remuneration थाई त न त फ्री रे कोन काम करिवि मते किछि तो दबो ना so it may be cash or it may be kind but the manufacturing process must be carried on सेठी एई जो manufacturing process मु कहली कोटा these are the manufacturing process एई activity सेठी होतुबार अछि so that we can call as a worker or now the most important area of the Factory Act 1948 तीनटा सुनो बागो सटर अछि तीनटा टिके लंबा अछि तीनटा मन रखबो कोटा कोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्कर एंड फैक्ट्री एसो शॉर्ट क्वेश्चन तमर 5 मार्क रो क्वेश्चन सब हैला 5 मार्क्स रो क्वेश्चन आ को सब बेले मन रखिबो ना फैक्ट्री हमें केमते डिफाइन करिब as per the Factory Act 1948 section 2M Factory Act केतरे डिफाइन हेची section 2M भूलिबोनी the Factory Act 1948 section 2M define factory means any premises सब को मिसे की बिल्डिंग ये सी तार जो बाहर रो भीतर रो सब मिसे की हम ताको फैक्ट्री कहबा एनी प्रीमाइसेस where 10 or more persons are working 10 जन ठू अधिक लोक काम करूचंती 10 or more persons are working on any day of the preceding 12 months 12 मास भितरे किछि जन 10 किछि भी दिन 10 लोक काम करतै पारंती गोटे दिन भी 10 लोक काम करतै पारंती any day preceding 12 month भितरे any day 10 जन मिसी के काम करथाई पारंती more than 10% right within the aid of power but the manufacturing process must be carried on कौन कहूची फैक्ट्री किए 10 or more persons are working on any day preceding 12 months with the aid of power the manufacturing process must be carried on with electrical energy 12 मास 10 जन केबे भी काम कर पावर को यूज कर पारंती बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेठी करूथले ताको हमें कोन कहिबा फैक्ट्री कहिबा apart from this 20 or more workers कोडिए रो अधिक लोक 20 or more workers working any day preceding 12 months without aid of power से power electrical energy सेठी नाही but the manufacturing process must be carried on manufacturing process अछि 12 मास भितरे 20 जन अधिक लोक विदाउट पावर रे सेठी काम करूछंती विदाउट पावर हमर कोन होई परिबो हमर पावर नै लाइफ टाइम की काम करबा सेठी करि परिबा कोन करबा हमें धूपकाठी फैक्ट्री करबा धूपकाठी बनेबा हमें से जो हैंडमेड काम करबा जस्तो पेपर वर्क करबा हैंडमेड वर्क करबा बहुत सारा फैक्ट्री एमती अछन राइट दे आर नॉट यूजिंग पावर they are doing their work in a sunlight right if this thing is there in that particular area then we can call as a factory 10 जन रु अधिक पावर थिबो 20 जन रु अधिक पावर न थाई भी पारे से 20 जन रु अधिक 1000 हुंतु 2000 हुंतु 5000 हुंतु 10000 हुंतु जेते हुंतु हुंतु that is the 1948 रो डेफिनेशन थिला सेम डेफिनेशन आज का डेट रे अछि बट से 10 जगह रे कोन करिवो अमेंडमेंट हे कि गवर्नमेंट कोन करछि 10 जगह रे 20 करिछि और 20 जगह रे 40 करछि 10 or more persons are working with the aid of power now एटा को कोन करिवो आकु भी मन रखिवो पण अमेंडमेंट को भी मन रखिवो 20 or more persons are working with the aid of power 40 or more persons are working without aid of the power एने टिके बडो कराई जायछि फैक्ट्री टा right now last one is what last one kon कहला तमरो important definition रा occupier who is the occupier means it is the ultimate controller over the factory को जे ultimate control करे ताकू कहा जाय occupier से manager हो owner हो से जे होची हो so the ultimate controller over the factory we can call as a occupier these are the important definition under the Factory Act 1948 section
दिस इज कौन कही गल सब वन स्लाइड को पळेले तुमको देखि पाने दिस इज ऑल यूनिट 1 मारे एटा यूनिट 1 ए तुमको कहितिल ना सिलेबस धरि कि बसिबो बोली कहितिल ना अनन्या कहितिल ना आज सिलेबस देखिबो पाठ पढिबो बसिच कहला फैक्ट्री को यूनिट बसिच यस मैम ओके गुड गर्ल कहला फैक्ट्री को यूनिट रे अछि को यूनिट रे अछि पिला माने फैक्ट्री हां आउ यूनिट 2 हां यूनिट 2 रे अछि हां वेरी गुड मु कहितिल ना फर्स्ट टाइम यूनिट 2 टा पढिबा हां यूनिट 2 रे हम कोन पढिले यूनिट 2 फैक्ट्री एक्ट सला माने तमर यूनिट 2 ओवर होइजिबो यूनिट 2 हैला यूनिट 2 रे तमर इंट्रोडक्शन टू लेबर लेजिस्लेशन ऑब्जेक्टिव स्कोप और टाइप्स और ये प्रिंसिपल्स देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आईएलओ देन असला तमर फैक्ट्री एक्ट एति की अछि तमर यूनिट रे माइंस एक्ट भी अछि माइंस एक्ट मु कहबी फैक्ट्री एक्ट सले माइंस एक्ट भी सरी जिवो ता पे व्यस्त होबा दरकार हैला अच्छा इंपोर्टेंट डेफिनेशन बुझिलो कि फैक्ट्री कोन बुझिलो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैम प्लीज अपलोड ऑल क्लासेस इन यूट्यूब मैडम मु भूल रे यूनिट 1 देखितली यूनिट अच्छा नो इश्यू अनन्या हैला अरे सुनो सुनो मां माने सुनो रे प्रियंका तमे एई ना बुझी पारलोनी पिला माने इंपोर्टेंट डेफिनेशन दा बुझी पारलोनी यस मैम सुनो सब जिंस हम एठी जानिचे हैला तमे खाली एठी तीनटा जिंस को बहुत भलो से मन रखिबो कोन गोटे हला वर्कर किए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोन फैक्ट्री को मां भूलिबोन रे फैक्ट्री डेफिनेशन पूरा मुंडो रे प्रिंट कर दबो फैक्ट्री आमे फैक्ट्री एज पर द फैक्ट्री एक्ट जे पचारला तुमको एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 section 2m define factory means it is any premises where 10 or more persons are working with the aid of power 20 or more persons are working without aid of the power preceding for 12 months but the manufacturing process must be carried on एमिति मिसे की जॉइंट करी भी कहि परिबो हैला 10 जगह रे ना 20 हेची 20 जगह रे ना 40 हेची दैट इज आफ्टर द अमेंडमेंट सब स्लाइड दे देबी सब स्लाइड दे देबी सब ये हेचिबो बाकी तमे टिके दया करी बुझु तो माइंस एक्ट 1942 ए यूनिट रे अछि फैक्ट्री एक्ट सरला पर ऑटोमेटिक माइंस एक्ट को मु पूरा सार देबी फैक्ट्री बुझि दियो माइंस ऑटोमेटिक सरी जिवो हैला बुझिलो पिला माने एति की बुझिलो ओके मैडम हां बुझिलो नेक्स्ट भी आ टिके खाली कहि देबी देन हला तमर कोन क्लास रे पढेबा ओके हां चल देन चलो ओके वेरी गुड गर्ल कोन सला इंपोर्टेंट डेफिनेशन after important definition our objectives कोन फैक्ट्री एक्ट ऑब्जेक्टिव कोन फैक्ट्री एक्ट ऑब्जेक्टिव हैला टू प्रोवाइड प्रॉपर है तीनटा जिंस को मन रखिबो एते मुंडो पुरेबन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट एनीवन विल आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन टू द वर्कर कोन ए आसीबो तमर अछि हैला तमर सब चैप्टर अछि कोन हमें प्रोवाइड करिबा हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन टू द वर्कर एटा हला हमर फैक्ट्री एक्ट रो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर देन आसो सुनो मु एठी तमर चैप्टर 2 टा लेखिनी सॉरी तमे कोन करो खाली लेखि दियो प्लीज काइंडली ए लेखाइनी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर चैप्टर 3 टू लेखाइची तमे काइंडली टिके लेखि दियो चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग स्टाफ इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट ए लेखियो मु कहि दो चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग स्टाफ ठीक chapter 2 is the inspecting staff under inspecting staff point number 1 inspector section 8 power of the inspector section 9 section
Inspecting staff, chapter 2. Chapter 1, important definition already we have completed. Not audible. Okay. 1 minute. So now, chapter 1, nothing audible. Okay, ma'am. Okay. Now, is it audible? Subhagola? Pilamane? Okay. So now, chapter 1, important definition already we have completed. Chapter 2 is inspecting staff. Lekha. Hela. Inspecting staff. Under inspecting staff, point number 1 is inspector, section 8. Power of the inspector, section 9. Certifying surgeon, section 10. 8, 9, 10. Inspector, section 8. Power of the inspector, section 9. Certifying surgeon, section 10. Clear? See, the inspector, additional inspector, chief inspector, all those inspector, once again, okay. In chapter 2, first chapter 2, inspecting staff, underline karibo, headline dabo, inspecting staff. Under inspecting staff lekho, point number 1, inspector, section 8. Point number 2, power of the inspector, power. Power mane electrical energy nahi, power mane hela inspector ro power. Taro kono mane ye achi khamata achi. Power of the inspector, section 9. Certifying surgeon, section 10. 8, 9, 10. Clear? Now who will appoint this person? Ankuta ki appoint karibo? Inspector, additional inspector, chief inspector, all those persons are appointed by the state government. It means entire factory, the Factory Act 1948, that controlled by state government. Factory Act to ke control korchi na the respective state. 80, सुनो आमर जिते सब एक्ट अच्छी किछि एक्ट को कंट्रोल करछि सेंटर, किछि एक्ट को कंट्रोल करछि स्टेट, किछि एक्ट को मिसिगिरी कंट्रोल करछन्ते हैला. सो फैक्ट्री एक्ट को के कंट्रोल करछि? स्टेट कंट्रोल करिबो. ओडिसा रो फैक्ट्री को कंट्रोल करिबो. जदि हम पळेबा एपटे वेस्ट बेंगल को फैक्ट्री को वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट कंट्रोल करिबो. एपटे जदि हम पळेबा हमर नेबर स्टेट एपटे कोन कहिला कोन आंध्र प्रदेश को सेठी तार आंध्र प्रदेश स्टेट कंट्रोल करिबो. सो एमान को अपॉइंट के करिबो? इंस्पेक्टर को हमर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करिबो, ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करिबो, राइट? So the Odisha state government will appoint the inspector, chief inspector, additional inspector in a respective state. हैला ए इंस्पेक्टर माने गोटे जो हमर डिस्ट्रिक्ट रो मजिस्ट्रेट माने अछंती, they can be one inspector for a respective state. District magistrate गोटे इंस्पेक्टर हेई परिबे फैक्ट्री रो for a particular state रे. Clear? Then power of the inspector, obviously जदि स्टेट गवर्नमेंट रो गोटे मजिस्ट्रेट गोटे अपॉइंट होचे एज ए इंस्पेक्टर, ताले तार पावर त केते बड़ होइतिबो तमे सेटा भाबिबा दरकार. कोन से मानक पावर? The power of the inspector, it is very vast power. Means what? If any kind of complaint, any kind of problem, it is there in the factory, any kind of complaint, it is there in the factory. Complaint means what? By any person. So it is the power of the inspector. The inspector can visit and will analyze everything and taking the action. If any kind of problem, any kind of situation it is there in the factory, then the inspector has the rights. The inspector can basically take action against the factory. Any kind of means what? Inspection, any kind of means what? Emergency situation, any kind of things. The inspector can visit the factory and the inspector can take the appropriate action, appropriate step related towards the factory. Clear? Now, certifying surgeon kiye? Certifying surgeon is a person. It is a one medical practitioner. Mane rakhibo. The certifying surgeon also appointed by the state government.
state government behalf appointed habo. It is a one qualified medical practitioner called as a certifying surgeon. Qualified medical practitioner kind a doctor. Gote medical practitioner kiye? Gote doctor. Ame taku kohiba certifying surgeon. ठीक है ता काम कोन ना any kind of emergency means any kind of accident, any kind of injury, any kind of problems it is there in the factory, then the certifying surgeon will take the quick action and that certifying surgeon will solve the problem. Apart from this, those are the young person, those are the adolescent, whether they are fit for work or not. तुमे काम करिया पे फिट अछ ना नहीं, certifying surgeon तुमको certify न कला पर्यंत तुमे काम करि परिबो नहीं. The person cannot work in a factory. It related to any area. It may be the hazardous area. It may be the dangerous area. You cannot work there. The certifying surgeon certify you. Oh yes, you are fit for work. You can start your work. Then you can start. Certifying surgeon will issue a token to every person. Right? So that is the work of a means medical practitioner called as a certifying surgeon. Is it clear to you, my dear students? Screen not visible. Screen रे chapter टा नहीं कही थी सेइति पई मु कही देली coming class रे screen visible हबो जोटा कि सेइति रे सब chapter अछि हैला बुझी गलो पूरा बुझी गलो yes okay सुनो तो हमें डिस्कशन करछे फैक्ट्री एक्ट सला परे तमर यूनिट 2 सरी जीवो माइंस एक्ट ता भितर मु कवर कर देबी डोंट वरी अबाउट दैट फैक्ट्री एक्ट आज इंपोर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर 1 सर्टिफाइंग मींस व्हाट इंस्पेक्टिंग स्टाफ चैप्टर 2 माने रखिबो क्लास काली सखाळे तमरे पढिबी फैक्ट्री एक्ट रो रेस्ट चैप्टर को हमें कवर कर दबा सो हमर यूनिट 2 फिनिश होई जिवो हैला ओके ओके आहा वाओ थैंक यू थैंक यू सो मच हैला जोडी बुझनो थो मा माने पचारथबो कोन करबा सिचुएशन तो या हैला मु मोर लेवल बेस्ट करिबी लेवल बेस्ट ट्राई करिबी तुमको बुझेबा पई बट तमे काइंडली काली क्लास सेकंड हाफ रे हबो नाइ रे मा काली क्लास सेकंड हाफ रे हमरो सार नेबे सुजी सार नेबे आज पर एडजस्ट करले हैला काली मॉर्निंग रे हबो काली मॉर्निंग रे एचआरपीडी अछि बाकी हमें कोन कहितली एचआरपीडी हमें सार दबा जल्दी जल्दी सेटा छोटटा हमें आको बहुत टाइम दरकार कागो एमईआरआरएल को सो हमें काली सखाले हमें एमईआरआरएल पढ़ दबा हैला फैक्ट्री एक्ट को फिनिश कर दबा सार दबा जदी पारिबा तो हैला देन हमें एचआरपीडी पढ़िबा हैला येड गोटे यूनिट के फिनिश हो हैला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट तुमको बुझेबा पई कारण एटा ऑनलाइन मु भी बुझी परची किंतु मु ट्राई करबी थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स tomorrow morning we will discuss rest of the things of the factory act 1948 and tomorrow evening Suji sir will take your class right okay thank you so much bye bye